Hello students, I am Somi from Olympic Institution, and we have studied till sexual reproduction in organism, and we have completed the definition of sexual reproduction. Now we will study sexual reproduction in plants and its related terms. After that we will discuss sexual reproduction in animals and related terms regarding it. Okay, so the first point, sexual reproduction in plant, it is sexual reproduction in animal and biennial plants show all the three phases, and in perennial plants the phases are not defined clearly. What kind of phases which we have discussed? Juvenile phase, reproductive phase and senescent phase. So ये तीनों phases, these three phases are shown in annual and biennial plant. Annual and biennial plant जितने भी हैं वो ये तीनों phases show करते हैं, but perennial plants उसमें boundary clear नहीं है इन तीनों phases का. Okay, now we will see that what are some definition related to sexuality in the plants. So if we study about the sexuality in plants, then we will get to know about that they may be homothallic or heterothallic, they may be bisexual or unisexual. At the same time यहाँ पे एक और term आ जाएगा, they may be monoecious and dioecious. ठीक है? So homothallic and heterothallic क्या है? There are plants and fungi where male and female reproductive systems are present on same plant. They are called as homothallic or monoecious. Okay? होमोथैलिक और मोनोइशियस और यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट या सेम इंडिविजुअल्स में, तो वो भी एक क्या है? प्लांट का ही पार्ट है. इधर वी कैन से होमोथैलिक और वी कैन से यूनिसेक्सुअल और वी कैन से मोनोइशियस. ओके, एग्जांपल्स में यू कैन राइट कारा, कुकुरबिटा, पाम एक्सेट्रा. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. Then there are plants where male and female reproductive systems are present on different plants. These are called as heterothallic or dioecious plants. At the same time, bisexual also, because male and female reproductive systems are present on different individuals of the plant. Okay, in angiospermic plant, flower is what? Flower is the only reproductive part. So this is about what? Sexuality in the plants. Now we will discuss the other terms. क्या है? Some angiospermic plants में जहाँ पे फीमेल क्या है? पिस्टिल कंटेन की रहती है, तो वो क्या कहलाएगी? पिस्टिलेट कहलाएगी. एंड द मेल विच बियर्स द स्टेमेन पार्ट या मेल पार्ट, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्टैमिनेट पार्ट. ओके, सो स्टेमेन यहाँ पे बोथ द पिस्टिल एंड द स्टेमेन यहाँ पे रहेगा मेल पार्ट, यहाँ पे फीमेल नहीं रहेगा. ओके, इन सम एंजियोस्पर्म्स flower contain both pistil and the stamen in one plant only. वही सेम चीज bisexual plant कहलाएंगे एंड unisexual plant में क्या हो जाएंगे? जो अलग अलग रहेगा. ठीक है, तो अलग अलग में क्या है कि मेल एंड फीमेल प्लांट क्या है? वो एक ही पार्ट में पाए जाए, वो अलग अलग प्लांट में पाए जाएंगे. उनको कहेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट. और जो मेल एंड फीमेल पार्ट है अगर वो सेम प्लांट में पाए जा रहे हैं तो उनको हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. There are some animals who reproduce active throughout their reproductive phase. वो क्या कहलाएंगे? Humans कहलाएंगे. And there are some other kind of organisms who are reproductively active only at the favorable seasons. Okay, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? वो क्या है? कुछ सीजन्स में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं. अदरवाइज सम एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या है? वो थ्रू आउट अपने रिप्रोडक्टिव फेज में ही एक्टिव हैं. तो जो सीजन्स में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है उनको क्या है? कैट्स, डॉग एंड बर्ड्स हैं. देन अदर क्या है? देयर आर सम वेरियस चेंजेस अकरिंग इन द रिप्रोडक्टिव फेज आफ्टर द रिप्रोडक्शन स्टार्टेड. सो वो जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं इन प्राइमेट्स, दैट नेसेसरी चेंजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन नॉन प्राइमेट्स दैट दोज आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल. सो नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू द हार्मोन्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स, उसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल. एंड इन प्राइमेट्स व्हाटएवर द साइक्लिक चेंजेस आर गोइंग ऑन ड्यू टू द चेंजेस ऑफ हार्मोन्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स, दैट चेंजेस आर अकरिंग cyclically and that is called as menstrual cycle. Examples you can see humans, apes and monkeys. यहाँ पे examples आप देख सकते हैं cats, dogs, lions. Okay, now sexuality is animal is also divided into two kinds. One is unisexual, another is bisexual. Unisexual में those organism who possess male and female reproductive organ on different individuals, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. यहाँ पे सेक्सेस क्या होते हैं? इनकी सेपरेट होते हैं. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? क्लियर होता है. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर नहीं होता है. एग्जाम्पल में यू कैन राइट कॉकरोच, ह्यूमंस, डॉग्स. यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द फिगर ऑल्सो दैट
the male and female reproductive structures are present on the same individual of the cockroach. That is why it is called as unisexual organism. And bisexual organism में क्या होता है? Those organism which possess male and female reproductive part on the different on the same individuals. Male and female reproductive part क्या है? वो सेम इंडिविजुअल्स पे प्रेजेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल में अर्थवॉर्म. यहाँ पे कॉकरोच में क्या है? दो डिफरेंट अलग अलग बॉडी फॉर्म हुई है, मेल कॉकरोच की, फीमेल कॉकरोच की. वहां पे मेल कॉकरोच का मेल बॉडी फॉर्म होगा, फीमेल कॉकरोच में फीमेल बॉडी फॉर्म होगा, एंड ये क्या कहलाएंगे? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. बाइसेक्सुअल में क्या है? दोनों मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी एक ही अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. ओके, now in the next we will see what are the events in sexual reproduction. Events में हम लोग 3 reproduction events देखते हैं. One is pre-fertilization, another is fertilization, and the next one is post-fertilization. So pre-fertilization events are those events which occur before the process of fertilization. Whatever the process that is occurring, that is formation, maturation, and everything of the male and female gamete, it will come under pre-fertilization event. Okay, so pre-fertilization event is further divided into 2 kinds. One is gametogenesis, another is gamete transfer. Gametogenesis is what? The formation of male and female gamete is called as gametogenesis. Means male gamete और female gamete का बनना क्या कहलाएगा? Gametogenesis. And when the formed gametes are similar in appearance and not differentiable, they are called as isogametes या homogametes. अब gametes तो बन गए, इसमें क्या है? 2 पार्ट्स है, homogametes या heterogametes. तो homogametes क्या होते हैं? जो gametes similar in size, shape and structure हो, उनको हम लोग बोलते हैं homogametes. And those gametes which are dissimilar in appearance, dissimilar in their size and structures, they are called as heterogametes. Okay, heterogametes में क्या? मेल बनाएंगे एंथेरोजोइड्स या स्पर्म, एंड फीमेल बनाएंगे एग या ओवम. Then other organism like gymnosperm, angiosperm and most of the vertebrates including human, उनकी क्या है? Diploid parental body है, यानी कि they will produce they have 2n formation of जेनेटिक कॉम्बिनेशन. वो सेल डिवीजन से क्या करेंगी? म्यूटिक सेल डिवीजन से वो एन फॉर्म करती हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करती हैं, एंड फ्रॉम देयर जाइगोट एंड फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है. देन डिप्लॉइड पेरेंटल सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. दे आर कॉल्ड एज मियोसाइट्स और गैमीट मदर सेल्स. जो प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? गैमीट मदर सेल या मियोसाइट. ओके, सो next phase is gamete transfer. How the gametes are transferred? So gamete are transferred. This one is the second step after the gametogenesis, and the formation of male and female gamete has happened. How they will be transferred into the female body and how they will fuse, this is whole in the gamete transfer process. The majority of male gametes are motile and female gametes are stationary in most of the cases. सारा जिम्मा गैमेट ट्रांसफर का किसके ऊपर होता है? मेल गैमेट्स के ऊपर होता है. सम एल्गी के और फंजाई में क्या है? दोनों ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मोटाइल हैं, सो दे आर कैपेबल ऑफ कमिंग टुगेदर एंड फ्यूजिंग. ओके, फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट मीडियम रिक्वायर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस मीडियम को वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, थ्रू वाटर करंट हो सकता है. ओके, any medium can be helpful for the transfer of male gamete near the female gamete. Now in plants like algae, bryophytes and pteridophytes, what happens? Water acts as medium for the transfer of gametes, and for the process of union of male gamete into the female gamete, mainly जितने भी मेल गैमेट है वो जर्मिनेट करने के लिए फेल हो जाते हैं. तो इसलिए क्या होता है? मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर. लार्ज नंबर किससे बनते हैं? सो एज टू वो डिस्ट्रक्शन ऑफ जो मेल गैमेट होता है उससे बचने के लिए मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर. सीडेड प्लांट्स में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स कैरी करते हैं मेल गैमेट्स को. उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स के अंदर एंथर्स होते हैं, एंथर्स के अंदर मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट, फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर plant. Okay, and this is done with the help of pollination process. A large number of pollen grains are released and anther burst कर जाता है. जब तो large number of pollen grains जो release होंगे वो कहाँ जाएंगे? It will stick to the stigma of the pistil, and from there it will move inside the ovary and वो dissolve होगा और वो female egg के पास जाके release होगा और वहां से fertilization and fusion का process start हो सकता है.
Okay, so this is all about the first step, that is pre-fertilization events in the sexual reproduction. Next two steps we will discuss in the next class. That's all for today. See you in the next class. Bye.